जीवन में 2-3 बातें हमेशा याद रखना है यार। जब हम अपने लिए काम करते हैं तो हमें किसी और से मतलब नहीं होना चाहिए। मैं पिछले 7 साल से ट्राई कर रहा हूँ, फॉर द लास्ट 7 years आई एम ट्राइंग टू एस्टेब्लिश द न्यू बेंचमार्क्स ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग, एंड बट आई एम अलोन. My one, that is a habit is there, whether it is good or bad I don't know, but yes, I am always believing without scolding you people are not in a condition to run, without monitoring you people are not in a condition to run, because you are having your own base and the background in the form of 12th class, in the form of graduation, in the form of appreciation, in the form of your achievements. But according to me, all these things belong to past, and there is not a single relationship with that achievement with the present context. Present context is only having one connection, that is your IQ. And one thing is 100% sure, that whenever I am teaching something, you people are receiving that thing. That means your IQ is appropriate. But IQ only helps in first time learning. But if we want to stay that learning in our mind for a long period of time and to reproduce at the time of examination after 1 year, it needs a real skills. So it is not about your IQ, it is about the skills. And these skills require 3 important dimensions. Number 1, a person who can teach you in a child-friendly pedagogy. Number 2, you yourself, when you should not doubt yourself and you should not get it by the command of others in the market or the peer groups. And at least every day you should sit on your table and chair for 9 hours with the self-belief that yes, I can do. And number 3, you should know the temperament of the UPSC. That UPSC is not our family organization. UPSC is not our CBSE board. UPSC is not who is giving the degree. UPSC is the organization which are providing the merit list to the DOPT for the selection of topmost people who can serve with this country as a bureaucrats. In half an hour you can read around 30 files. Within 30 files you should read the keywords. In the keywords you should take the decisions. And for this purpose, this process is little bit very complex and typical. In the one go they are checking your objectivity. In the one go they are checking your subjectivity and analytical skills. In the one go they are checking your decision making. And for this thing at least 800 topics should be there in your mind. You should know contemporary part, you should know some example, you should know some data. Only then the things will work. Problem is that we are never consolidate our studies, and every day we are guiding by quantity. We are visiting the market. Market is full of business. Business is full of shops. Shops is full of books, and you are attracted towards books. If anybody is reading any book, you are feeling that I am and my material is inferior and that material is good. But the real concept is that if you are having 2 pages, your first responsibility is that these 2 pages should go in your mind. If these 2 pages are going in your mind, the task will be very simple. Life is not about criticism. Life is not about criticizing others or appreciating others. Life is all about one thing, self-development. The overall expectation of the UPSC is A, but we are not having A. So this is your responsibility to produce the A. When A is matching, automatically you will get selected. This examination according to me is very easy if we are doing a systematic preparation. If we are consistent for at least 300 days, if we are working daily 300, that is a 8 hours, and in the whole that is a month we are working at least 300 hours, everything is possible. But the possibility says you should not be hyper. Possibility says you should not feel UPSC is very tough or UPSC is very easy. The possibility says that you should not attracted by some particular names which become very prominent in the market only because of advertisement, only because of you people. People are providing the product, but it is upon you whether you want to choose that product or not. I am going into 24/7. There is a product by the name of sugarcane juice with the price of 120 rupees. There is also one of the product shikanji. There is also a product Uncle Chips. There is also so many products, and all the products are having their own, that is a this thing, that is a claims that this product is very good, hygienic, this thing. But still I am believing that my stomach is not that much appropriate to consume this food. My age is now that much strong that I can consume this junk food, and I am always happy to have 2 chapati made up from multiple grains with 2 or 3 that is a vegetables, and every day I can eat that thing. Even the products are available in the market. But problem is that we are attracted by the products without knowing whether it is our demand or not. Everything should be suitable at the time of appropriation. That means when the time will come, you can do that particular thing. Without having the content, how you can attempt the answer writing? Without having the confidence, how you can solve the MCQ? The same thing will not repeat in the examination like our graduation, the 10th and 12th class, that we learn 100 questions, their answer, and then we can produce. You should apply your mind. Nowadays they are asking the question, Panchayat Raj institution India established for the decentralized governance, but even then decentralized governance is not successful. According to you, whether we can fund, we can work upon funds or functions.
give your critical evaluation. They are making the micro analysis from your side. We अभी तक हम learn कर रहे थे, we still learning that in the पंचायती राज institution there is a problem of 3F, fund, function, functionaries. अब उन्होंने इसको हटाई दिया, उन्होंने पूछा कि according to you funds are more important or functionaries are more important? Give the critical analysis. Now this question is not readily available in your mind. For writing this question, first you should have the understanding of mechanism of panchayati raj through Gram Sabha. Then you should remember this thing, every Gram Sabha is having the funds, but these funds are misutilized. Then you should generate 80% debate on the functionaries, that funds are there but functionaries are not capable to utilize these funds, and 20% you should put emphasis upon those states which are not having the funds, like Uttar Pradesh, Bihar, which are not providing the state finance commission. And then you can provide the classical example of the communist state in the form of Kerala, where Kudumshri Enterprise is working, which is a classical example regarding the funds as well as functionaries and their amalgamation. Jai Hind. क्या मेरी बातों से कुछ समझ में आया? I am not your enemy. Never considered me your enemy. I am your true friend. But it is upon you whether you should respect and love your friend or not. Because your friend is little bit painful. My language is little bit kadwa. And when my language is bitter, my commands are bitter, it hurts you on the daily basis. But according to me, this particular thing is very important, because somehow over a period of time, after 15-20 days, you are living a second campus life in Rajendra Nagar. More freedom than campus. Campus में फिर भी इतना freedom नहीं होता, because at that time parents are not believing you. But today you are also having one thing within your support, that is belief system of your parents. At that time parents are somehow controlling the finances, but today parents are giving more finances in the hope that you will do something. So please never misutilize this freedom. Freedom बहुत अच्छी चीज होती है. Freedom is must for growth, but overutilization of freedom is disastrous, because it can also degrade you. तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी. क्या अपने सर को फॉलो करोगे? अरे क्या अपने सर को फॉलो करोगे? इस एग्जाम को एग्जाम की तरह लोगे? यस और नो? इसको लाइटली मत लेना और ओवर कॉम्प्लेक्स मत लेना. बस इसको किसकी तरह लेना है? एक एग्जाम की तरह. और इसके एक वर्ड आगे कभी मत भूलना, बोलो कंपटीशन. ओलंपिक्स में जब 10 लोग भागते हैं तो 1 सेकंड पर भी गेम ऊपर नीचे हो जाता है. इससे बस एक चीज समझ में आती है, बोलो नो स्कोप फॉर मिस्टेक्स. आप आज से सिर्फ एक चीज पर दिमाग लगाओगे, नॉट फॉर लर्निंग हाउ टू कंट्रोल योर मिस्टेक्स. क्योंकि कंपटीशन में एक ही चीज हमें जिताती है, हाउ टू मिनिमाइज द मिस्टेक्स. जैसे जैसे आप हर रोज कोशिश करोगे हाउ टू मिनिमाइज द मिस्टेक्स, अपने आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा. और जब तक ये कोशिश करोगे कि आई कैन लर्न, मिस्टेक कभी खत्म नहीं होंगे, बिकॉज योर एम्फोसिस इज ओनली ऑन लर्निंग. मैं कह रहा हूँ उल्टा सोचो, नॉट ऑन लर्निंग, ऑन कंट्रोलिंग द मिस्टेक्स. यार यूपीएससी को तुम लोग एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हो. सेल्फ हार्म आ गया. 1-2 साल तुम सेलिब्रेट करते हैं, तीसरे साल डर लगना शुरू हो जाता है, चौथे साल हार्ट फेल होने की कोशिश होती है, 5वें साल ऐसा लगता है बस भगवान उठा ले. तो जो नए बच्चे हैं ना, उनके लिए एक जश्न है, क्योंकि उनको अभी सीरियसनेस का पता ही नहीं है कि इतने पढ़ने के बाद भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ाई करनी अभी शुरू ही नहीं करी. डर तो उसको लगता है जो पढ़ना शुरू कर देता है. नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? जो आदमी पढ़ ही नहीं रहा है उसके लिए एग्जाम कुछ भी नहीं है. वो कहेगा अरे निकाल दूंगा. डर उस आदमी को लगेगा जो बिल्कुल मेहनत से पढ़ रहा है, क्योंकि अब उसने पढ़ाई कर ली है, उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, उसको डर लगेगा. बाकी इसको डर नहीं लगेगा. बाकी सबको डर लगेगा एग्जाम से 2 दिन पहले, एग्जाम वाले दिन और एग्जाम से थोड़ा सा अगले दिन. उसके बाद वो घर भाग जाएगा एज अ ओवरऑल रेस्क्यू, और उसके बाद वो कहेगा भगवान मेरा एग्जाम तो अच्छा था. सबको ऐसे करके बोलेगा यस व्हाट अबाउट योर एग्जामिनेशन? ओके माय एग्जामिनेशन वाज गुड. ओके लेट्स सी व्हाट विल हैपन. उसको पता है अंदर से कुछ नहीं है, लेकिन उसके कंधे कंधे ऐसे मटकते रहेंगे, ऐसे ऐसे वो करता रहेगा, बिल्कुल यो मैन, मैचो मैन. आपको इस कैटेगरी में नहीं आना है. 1% बच्चा जो मेहनत करता है उसको पता है कि पीटी का गेम नहीं है, किसका गेम है? मेंस का. और उसका पूरी आंखें पूरा शिकार किसकी तरफ भागती है? मेंस. लेकिन एक बात याद रखना, जब पीटी अच्छा होता है तभी मेंस अच्छा होता है, और जब मेंस अच्छा होता है तभी पीटी अच्छा होता है. इन दोनों में कोई भी सेपरेशन नहीं है. बोथ द थिंग्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. क्योंकि आपको वही फैक्ट मेंस में लिखने हैं और मेंस के फैक्ट किस में लिखने हैं? पीटी में लिखना है. बिकॉज नाउ पेपर पैटर्न इज प्योरली एनालिटिकल, बोथ पीटी एंड मेंस. और जब तक आपके अंदर उतनी काबिलियत नहीं आएगी, आप अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट देते जाओ, यू आर जस्ट इंक्रीजिंग योर एज, नथिंग एल्स. डरा नहीं रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो कृपया करके इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहो. चाहे पेपर कैसा भी आया हो, 15,000 बच्चे मेंस लिखेंगे, हाँ या ना? चाहे पेपर कैसा भी मेंस का आया हो, 3,000 बच्चे इंटरव्यू देंगे, हाँ या ना? इंटरव्यू चाहे कैसा भी बोर्ड बैठा हो, 1,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे, हाँ या ना? तो व्हाई यू आर क्रिटिसाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन? व्हाई यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ?
दैट द होल ईयर नॉट वर्किंग, दैट द एट पर द डिमांड ऑफ द यूपीएससी, क्योंकि जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो मार्च से कोई ना आए हैं, दे आर आल्सो लाइक यू, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम। तो एक बात समझो, पहला लेवल क्या है, बोलो पढ़ाई, पढ़ाई के बाद क्या आएगी, बोलो रिफाइनमेंट, और रिफाइनमेंट के बाद आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है, तभी एक एक नंबर का इजाफा होगा। क्या मेरी बात समझे? तो पहले उस लेवल पर पहुंचो ताकि मैं आपके अंदर क्या कर सकूं, रिफाइनमेंट। उस लेवल पे पहुंचना बहुत जरूरी है। कितने साल लगेंगे वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक समय बाद ये श्योर हो जाता है कि इस एग्जाम में हम सेलेक्ट हो जाएंगे, जब हमें अंदर से फील आने लग जाती है दैट यस नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जामिनेशन। और वो फीलिंग कैसे आती है, व्हेन वी वॉच द पेपर हमें लगता है हम लिख सकते हैं, लिखने के बाद जब हम लिखते हैं तो सर जब पढ़ेंगे तो आपको रिफाइनमेंट बताएंगे। तो वी आर नॉट नोइंग बट वी शुड रीच दैट लेवल। 3 लेवल का एग्जामिनेशन है ये, बोलो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट 800 टॉपिक्स। 90% लोग इस पे नहीं पहुंच पाते। असली इंप्रूवमेंट तो इसके बाद आना शुरू होता है। पीपल लाइक मी कैन इंप्रूव ओनली आफ्टर दैट फॉर मेंस। 800 टॉपिक भी मैं ही कराता हूं, लेकिन उसके लिए वी वांट योर सपोर्ट दैट यू शुड रिवाइज द थिंग्स अगेन एंड अगेन। जब वो लेवल आ जाएगा देन आई कैन टेल यू in the answer what to write. Otherwise when I speaking the answer you people are impressed, wow क्या सर ने आंसर बता दिया। लेकिन मेरा एक लाइन लिखना that this thing is coming in 9th five plant is a lot of hard work which put by me from the last so many years। वो आपके लिए एक लाइन है 9th five plant, लेकिन मैंने उसके लिए बहुत रीडिंग कर रखी है, that's why I'm putting that one line in a very small question of 200 words। लेकिन वो एक लाइन एग्जामिनर के दिमाग में क्या डाल देगी, इम्पैक्ट। करोगे इस लेवल पे मेहनत? अरे करोगे तो न्यूज़पेपर टिप्स पे रहना चाहिए। किस पे रहना चाहिए? जैसे सीरिया इशू आए पूरी कहानी दौड़ जाए दिमाग के अंदर कि यूएसए वर्सेस 4 एंगल दौड़ जाए तुरंत, अरब स्प्रिंग, बशर अल असद, यूएसए रशिया एज वेल एज इस्लामिक स्टेट अल नुसरा एंड नाउ अरहर अल शाम। 3-4 नाम दिमाग में दौड़ जाए, कुंडुस, इदलिब, मनबीज। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? कुर्द, वाईपीजे एंड वाईपीजी, दीज आर रॉ मटेरियल की पॉइंट्स। लैंग्वेज यू डेवलप, language is never be a problem, never feel language is a problem. If we are having the content, our mind automatically produce the language with few grammatical mistakes and it is bearable, except essay. In the essay they are not appreciating any mistakes in grammar and spelling, but in the GS paper if you are committing some mistakes in grammar or spelling, it is bearable, believe me. No one is considering because they just want your gist, whether you understood the question writing the points or not. But yes, in essay your English should be number 1, classical. Otherwise, you can never score 150 marks in the essay. Because essay paper is only checking your comprehension skill in English, language and command over the language.